good to see your son. I keep saying he's got Right now we're going to the US for the truck. People must be going to Of course. Hakim Saab and Raghu Saab. next time here I go. So with this, we formally close the session. Thank you everyone for participating. Without Des and the audience, respected audience, I want to have some couplets in the memory of our great leader, Shafi Sahib. تَتہِ کانٛچ نازٕ نموٗد تی آسی تَتہِ موجوٗد باقی تمام چھُ بے سوٗد تی آسی تَتہِ موجوٗد یِم آیہِ تِم ییٚتہِ درٛایہِ یِم درٛایہِ یور مہ آیہِ یور یِتھ یہِ کَرکھ بوٗد تی آسہِ تَتہِ موجوٗد کُنہِ دٔپِتھ کُنہِ روٗد کُنہِ دیُت کُنہِ رس وجوٗد کُنہِ سر کرتن زوٗد تی آسہِ تَتہِ موجوٗد کُنِس دوٚپُس کُن کر سر یور یِتھ مہ کر ارسر کر سجدٕ پر درود تی آسہِ تَتہِ موجوٗد پنڈت شفیعت آو رُت کٔرِتھ ییٚتہِ درٛاو اکثر کارِ بہبوٗد تی آسہِ تَتہِ موجوٗد ویوہار تہٕ کیٛاہ ورتاو کٲنٛسہِ ہٕنٛز مہ تھوُن گراو ہردم کران کینٛہہ روٗد تی آسہِ تَتہِ موجوٗد کرُن رُت کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ پانہٕ ؤنۍ بوہرُن سۭتۍ درٛاو مسروٗر مسعوٗد تی آسہِ تَتہِ موجوٗد حاکِم تہٕ کُنہِ محکوٗم لوور پوسٹن پٮ۪ٹھ ٲسۍ کُنہِ ساتہٕ محکوٗم ہایر پوسٹن تہٕ حاکِم تہٕ کُنہِ محکوٗم ہر رنگہٕ سُہ مرحوٗم پٔزِس پٮ۪ٹھ ڈٔکِتھ روٗد تی آسہِ تَتہِ موجوٗد یار دوس آیہِ ژۄپٲرۍ راتھ اوس ہُپٲرۍ یپٲرۍ ؤنِو کوٚر تٔمۍ اچانکن اوس نہٕ توقع کینٛہہ تیوٗتاہ اوس ترووُکھ زن روٗد تی آسہِ تَتہِ موجوٗد یہِ میوٗل تس کرنُک پھل دِلس تس اوسُے نہٕ مل نہ اوسُس کُنہِ رنگہٕ کرٛوٗد تی آسہِ تَتہِ موجوٗد مٔرِتھ رِنٛدٕ چھِ زِنٛدٕ روزان کینٛہہ مٔرِتھ تہِ چھِنہٕ مران رِنٛدٕ چھِ زِنٛدٕ روزان کینٛہہ مٔرِتھ تہِ چھِنہٕ مران عملن چھِ یہِ کتھ بوٗد تی آسہِ تَتہِ موجوٗد توے چھِ أسۍ ییٚتہِ سٲری صرف تہنٛدِ محبتس انٛدر راوان چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز ؤری 24 ستمبر گوٚن تٔمۍ رکھتہِ سفر چھٲتن جنتُک سُہ روٗد تی آسہِ تَتہِ موجوٗد مےٚ کوٚر واریاہ ژھوٚٹ حظ دِلشاد اتھٕ تھوٚد تُل منگتس سُہ مٲلکہِ کُن عاقبت کرُس محموٗد تی آسہِ تَتہِ موجوٗد
डायस पर बैठे मेहमानान ज़िल्वक़ार मोहतरमा निगहत शफी साहिबा और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज का ये इज्तिमा मरहूम मोहम्मद शफी पंडित साहब की याद में मुनाक़िद हो रहा है और मेरे लिए ये एजाज़ है कि मरहूम के साथ अपनी ज़िंदगी के 50 साल से ज़ायद का करीबी रिश्ता जोड़ा सकूँ। 1974 के अवाइल में वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एक प्रोजेक्ट पर तैनात होकर आए और मैं बहैसियत असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ काम कर रहा था। साहब के कहीं वो बयान किया। बाकी ज़रा अपने तो घर के लोग हैं, खासतौर पे जनाब इफ्तिखार तरारो साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत काम किया उन्होंने इस महफिल को सजाने, इस महफिल को कामयाब बनाने में। इनके साथ साथ मेरे रफ़ाका रफ़ीक अहमद साहब, देवा साहब, सब लोग थे, बहुत काम किया। और ख़ास तौर पे हकीम साहब का मैं शुक्रिया करूँ, वो आजकल साहिब सदर हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के। इतना ही नहीं कि पैसे थे, उन्होंने ये फैसिलिटी अवेलेबल की, बल्कि बराबर खड़े रहे हमारे साथ और ये देखने के लिए वो भी हमारे मेंबर हैं और बड़े नामवर मेंबर हैं, काम करने वाले मेंबर हैं। उन्होंने बहुत काम किया इसके लिए। हम मोल मोश फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उनके साथ डॉक्टर सैयद जुबैर साहब के खड़े रहे हमारे साथ और जितने भी इंतजाम थे उनमें हिस्सा लिया और कंट्रीब्यूट किया प्रैक्टिकली। उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, मोल मोश के बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी तरह हम खासतौर पर सब लोगों का जो तशरीफ फरमा यहाँ पर है, फर्दन उनका शुक्रिया अदा करते हैं ख्वातीन हज़रात का, क्योंकि वो यहाँ आए शफी साहब के तय अपना खराज पेश करने के लिए। लेकिन मैं उनसे गुजारिश है कि जीसीसी के लिए भी दुआ कीजिए ताकि ये लोगों की खिदमत में जुटा रहे और आगे लोगों की खिदमत में भी अपना काम कर सके। इसके साथ अपना दस्ते ताउन हमें मिलना चाहिए। हिम्मत हमारी होती है और जितनी हमारी हिम्मत है हमारे खदमात कौम के कहीं पेश है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब जिन्होंने अपनी गुनागुन मसरूफियात के बावजूद हमारे लिए यहाँ वक्त निकाला और इस फर्स्ट मोहम्मद शफी पंडित मेमोरियल लेक्चर में आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हमारा एक और रह जाता है, ये मेमेंटोज पेश करने हैं, तो प्लीज जल्दी जल्दी मेमेंटोज पेश कर लीजिए। सबसे पहले बजाज साहब का मैं इनको पेश that is open, fair and compassionate. A system that serves people as he did, with integrity and humility. Thank you so much. Occasion. Sena Sahab, Government, Jammu and Kashmir. Mufti Sayyid Sahab, Chairpersons of State Public Service Commissions. Central Government Pensioner Welfare Association. And this is the people of Mold privilege card. This card right now enables 580 senior citizens. Thank you so much. Comes from others, and we thank you for allowing us to see that mosaic of his journey. To us, he was a father, a guide, and the most affectionate person we ever knew. Not a man of titles and honors. His silence on his achievements reflected his deep sense of modesty. He believed that true worth is measured in deeds, not in words. One of his happiest and proudest moments came during his service as Divisional Commissioner of Kashmir, when he occupied the same office once held by his father, my grandfather, Fateh Muhammad Bapoor, who was the Wazir Wazir during the reign of the Maharaja. Yet, my father's sense of service extended far beyond Jammu and Kashmir. Across India, his contributions remain significant to the youth, with his tenure to the Youth Hostels Association of India. His multi-generational impact across India was evident in his role in the authoring, framing, and eventual adoption of the Mandal Commission recommendations
in the early 1990s, and that is one of the hallmarks of his career. It was a momentous step towards social justice, opportunity, and equity in this country. Beyond his public life, he had a deep and abiding lesson. He was a founding member and passionate supporter of the Vedal organization, where he joined fellow academics and intellectuals from across India in celebrating Persian literature and thought. His love of poetry shaped not only his intellect but also the gentle. Their heartfelt reflections on the life of enduring contributions of late Muhammad Shafi Pandit Sahab. Now may I invite Abdul Majid Sahab, noted geoscientist and a very good childhood friend of Shafi Sahab, to Friends, senior colleagues. I was a friend with this Pandit family for more than 50 years. With his father, mother, known as church and other people. I used to go to their home off and on for all the 50 years, and they treated me as one of the important members of their family. Shafi Sahiba and her family members, distinguished audience, ladies and gentlemen. In 1969, حضرت علی علیہ السلام نے اس وقت کی طرف کیوں اشارہ کیا ہے؟ جو شخص بلکہ ان کی شرافت، تدبر اور ان کے جذبے انسانیت کو سلام پیش کر رہا ہے. جناب خورشید گنائی اور سب سے زیادہ لیکن بیوی جو میرے عزیز دوست شفیع پنڈت کی بیگم ہے اور ان کے خاندان اور باقی دوست. It's a pleasure for me to be here to talk to you, to deliver this first Shafi Pandit Memorial Lecture on a subject which I know from my conversations with Shafi Sahab, which incidentally lasted for more than 50 years. ابھی کہا گیا تھا کہ 50 سال کی دوستی تھی. میری شفیع صاحب کے ساتھ دوستی 50 سال سے بھی زیادہ تھی. Respected Shri Wajad Habibullah Sahab, Nasir Aslam Somani Sahab, Shri Atal Jallu, Chief Secretary Jammu and Kashmir, خورشید گنائی صاحب چیئرمین GCC, بہت سارے ساتھی پرانے ہیں محفل میں. حسین درابو صاحب ہیں, وائس چانسلر پرانے وحید صاحب ہیں, میڈم نگٹ شفیع پنڈت اور ان کے جو پریوار کے سدسیہ ہیں. Shri Wajahat Habibullah Sahab, former Chief Information Commissioner of India, who had the opportunity to hold very high positions in the state government and in the central government. Dr. Ashok Ban Sahab, former Director General of Police. Shri Khurshid Ahmed Ganai Sahab, Shri Muhammad Rafi Sahab, Shri Kifayat Hussain Rizvi Sahab, Shri Abdul Latif Deva Sahab, and many dignitaries in the hall. Shri Nasir Aslamwani Sahab, Advisor to Honorable Chief Minister, Shri Hasid Rabu Sahab, Shri M.M. Bhatt Sahab, and so many others, distinguished members of the civil society, colleagues, ladies and gentlemen. It a very thoughtful initiative, as was just now said by Dr. Ashok Ban. To be on record for this, but Gloria Saab became the Chief Secretary and Shafi Saab was made the Chairman of the Public Service Commission. Briefly, ये पेशवर और सलाहकार भी और हिदायत भी करने वाले की पहली इंफॉर्मेशन कमीशन को कैसे चलाया जाए. जनाब गुरु साहब, हमारे कुरान करीम की आयत बयान करूंगा. तबारकल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क
هو الكل شيء قدير الذي. As Joint Secretary Minorities Affairs in Government of India, I became a blue-eyed boy of then Minister Sitaram Kesri. And I remember once Sitaram Kesri came here and he stayed with Shafi Saab in Gupta Road. I remember that. I think Madam would also remember that. And he made a great, very keen to get Shafi Saab as the Finance Secretary, and he got it. And he gave him all the powers, the whole confidence. He had 100% confidence in Shafi Saab. And I remember that I was posted here as Secretary, and Shafi Saab initiated a lot of reforms and a lot of improvements in the functioning of the members of, he was an upcoming time and he was a member of that committee. But he lost out to an equally good officer, Dr. S.S. Gloria.